सो हेलो गाइस। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ड्रैगन एज ओरिजिन का गेम प्ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यू गेम पे और हम खेलेंगे ओरिजिन, उसके बाद अवेकनिंग, उसके बाद दूसरे डीएलसीज करेंगे। तो सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं अवेकनिंग। The Chantry teaches us that it is the hubris of men which brought the Darkspawn into our world. The mages had sought to usurp heaven, but instead they destroyed it. They were cast out, twisted and cursed by their own corruption. They returned as monsters, the first of the Darkspawn. They became a blight upon the lands, unstoppable and relentless. The dwarven kingdoms were the first to fall, and from the deep roads, the Darkspawn drove at us again and again, until finally we neared annihilation. Until the Grey Wardens came. Men and women from every race, warriors and mages, barbarians and kings. The Grey Wardens sacrificed everything to stem the tide of darkness, and prevailed. It has been 4 centuries since that victory, and we have kept our vigil. We have watched and waited for the Darkspawn to return. But those who once called us heroes have forgotten. We are few now, and our warnings have been ignored for too long. It may even be too late. For I have seen with my own eyes what lies on the horizon. Maker, help us all. तो ठीक है, ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन स्टोरी का। ओके, तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन स्टोरी का। सॉरी थोड़े नॉइस के लिए। अब हम लोग करेंगे कैरेक्टर क्रिएशन। तो सबसे पहले तो हमारे पास ऑब्वियसली 2 जेंडर है और 3 रेसेस है, ह्यूमन, एल्फ और डॉर्फ्स। और उसके बाद हमें मिलती हैं 3 क्लासेस भी, एक वॉरियर, मेजाई और रोग। ठीक है, रोग जो कुछ भी बोलते हो, ठीक है। तो ये 3 क्लासेस मिलती हैं ह्यूमन और एल्फ्स में, और डॉर्फ्स में हमें केवल 2 क्लासेस मिलेंगी, वॉरियर और रोग की। थी उसके बाद जैसे आप जो भी कैरेक्टर, जो भी रेस सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद जो आप उसकी क्लास सेलेक्ट करते हैं,
उस हिसाब से कुछ थोड़ी अलग अलग सब में जो है शुरुआत की स्टोरी चलती है। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे ह्यूमन एंड नहीं, डॉफ ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि मैं रो कैरेक्टर बना रहा हूँ, उसमें डॉफ ज़्यादा बेहतर होते हैं। और उसके बाद हम बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे कॉमनर या फिर नोबल, ठीक है, जो भी आप सेलेक्ट करें ऑप्शन, कॉमनर नोबल। उसमें फिर बिगनिंग की स्टोरी थोड़ी अलग होती है, अलग अलग सिचुएशन पे आप होते हैं। तो सबसे पहले मैं सेलेक्ट करूँगा कॉमनर, उसके बाद हम जाते हैं आगे प्रीसेट पे, अपीयरेंस जैसा चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा इसमें। फेरेन इसका नाम है, मैं नाम भी नहीं चेंज करूँगा। उसके बाद हमारा आ जाता है एट्रीब्यूट्स। तो आप अगर रोग कैरेक्टर बना रहे हैं तो मेन फोकस होता है डेक्सटैरिटी पे। अगर आप मेज बना रहे हैं तो मेन फोकस होता है आपका विल पावर और मैजिक पे। विल पावर होती है बेसिकली, अगर आप कोई दूसरा कैरेक्टर सेलेक्ट करते हैं मेज के अलावा तो ये स्टैमिना को रिप्रेजेंट करता है, और अगर आप मेज करते हैं, मेज सेलेक्ट करते हैं तो ये आपका जो है मैना को दिखाता है, मैना बार जो है इस पे होती है। बाकी इसके अलावा स्ट्रेंथ है, डेक्सटैरिटी, कनिंग और कॉन्स्टिट्यूशन है। कनिंग और डेक्सटैरिटी जो है आपका पॉइंटेड वेपन जैसे कि डैगर हो गया, उसके डैमेज के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अगर आप डैगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप डेक्सटैरिटी या कनिंग पर फोकस करें, और अगर आप थोड़ा टैंकी कैरेक्टर बनाते हैं तो आपका फोकस मेन स्ट्रेंथ पे होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन हमारी हेल्थ बार होती है, तो मैं मेन फोकस जो है डेक्सटैरिटी पे करूँगा। बाकी सारी चीज़ों के लिए जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, विल पावर हो गया, मैं टोटली डिपेंड रहूँगा एक्सेसरीज़ पे या फिर इक्विपमेंट्स पे जो ये यूज़ करते हैं। बेल्ट, एम्यूलेट, रिंग्स, उनसे कुछ बोनसेस मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं डेक्सटैरिटी को बड़ा यूज़ कर लेता हूँ, तो मुझे 5 पॉइंट मिले थे, मैंने सारे डेक्सटैरिटी पे यूज़ किया। उसके बाद ये जो है आपकी स्किल्स हैं, तो कॉम्बैट ट्रेनिंग स्किल बेसिकली अगर आप ज़्यादा डैमेज आउटपुट करना चाहते हैं तो उसके लिए कॉम्बैट ट्रेनिंग चाहिए होती है। नीचे टैक्टिक्स हैं, आप कुछ टैक्टिक्स जो है अपने कैरेक्टर पे डिफाइन कर सकते हैं जिससे कि वो किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे कोई स्किल यूज़ करे या फिर कोई टैलेंट यूज़ करे। इसके अलावा कोअर्शन है, स्टीलिंग है, ट्रैप मेकिंग है, सर्वाइवल है, हर्बलिज्म है और पॉइजन मेकिंग है। बाकी नीचे के दोनों मैंने एक्सप्लेन कर दिए। चलिए अब आगे चलते हैं। ये रहे हमारे टैलेंट्स। तो पहला टैलेंट मैं स्पेंड करूँगा ड्यूअल स्ट्राइकिंग पे। उसके बाद मैं सेलेक्ट करूँगा ड्यूअल वेपन स्वैप पे, क्योंकि नेक्स्ट स्किल जो हमें चाहिए वो है मोमेंटम। इससे हमारा अटैक जो है वो फास्ट हो जाता है। वही ड्यूअल स्ट्राइकिंग से हम 2 हथियार एक साथ चलाते हैं, तो दोनों हथियारों से एक साथ स्ट्राइक करते हैं तो उससे डैमेज आउटपुट जो है थोड़ा बढ़ जाता है। बाकी आर्चरी के स्किल्स हैं, ये कुछ रोग के स्किल्स हैं, फिलहाल इस पर फोकस नहीं करेंगे हम। और डिफ़िकल्टी मैं नॉर्मली सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि अगर मैं नाइटमेयर सेलेक्ट करूँगा तो बहुत ज़्यादा ट्यूनिंग की ज़रूरत पड़ेगी कैरेक्टर को, और बहुत ही ज़्यादा मतलब गेम प्ले भी काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि स्लो गेम प्ले होगा, डैमेज आउटपुट कम होगा, एनिमीज़ की हेल्थ बार काफ़ी बड़ी होगी और गेम प्ले जो है थोड़ा लंबा हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम गेम। Deep beneath the Frostback Mountains sits Orzammar, largest and proudest of the 2 remaining dwarven cities. Once the seat of an underground empire, Orzammar now stands alone, cut off from the world by the Darkspawn, still clinging to the memory of its former glory. Below the vast statues and gilded halls where the noble families play at politics, the lower castes live in their shadows, scurrying to serve like their ancestors before them. Below that is you. You are casteless, the dirty secret staining Orzammar's perfect society, forced, along with your sister, to sell your services to the crime lord Barat. To the rest of Orzammar, you are proof that the casteless deserve their fate. But you know you do what you have to, the same as everyone, just to survive. तो यहाँ से हमारे कैरेक्टर का I छोटा can't सा keep भी इंट्रोडक्शन gambling था। on you forever, Precious. You've got a sweet look,
Something to light a man on fire. But you gotta make it count. Please, Barat. Can we not do this in front of my brother? Why not? He knows the slope of the land, don't you, boy? You told me a lot of things, not one of which meant more than a fart in the middens. Before me, your sister was just another duster. Now check her out. Braids down to here, gold-capped teeth. She can recite elf poetry and play the string harp. Every man's dream. All she's gotta do is find a lord, squeeze out some kid who looks like him, and we're all living the easy life in the Diamond Quarter. Please, don't get involved. You know that never goes well. I'll treat her however I like, as long as you both eat off my plate. You keep your head down and say aye to any job I decide is low enough for scum like you. In return, I put out coins so you can doll yourself up and get a belly full of some nobleman's brat. Then you both go free, and I get to join the family and be called my lord for the rest of the little prince's life. Checking on my investments, and right now, they don't bear much gold. I'm giving you another week, Precious. If you haven't found a patron, you're back to sweeping streets. But I have. I've met someone. That is, I didn't want to promise, but he seemed interested. Everyone needs me. Because everyone has things they want, and my Carter, we're the ones who provide. Until you can do that, you're nothing but my errand boy. So shut up and do as you're told. Your buddy Lesky's waiting outside. He knows what I'll need from you today. Don't even think about bungling this job. Your whole family's on loose sand with me right now. And I know you don't have anywhere else to turn. I'm sorry you had to see that. Just be careful about showing him. You've been lucky so far. He thinks it's funny when you and Lesky get vulgar. Some of the nobles I've met, they'd as soon have your head for speaking your mind. That's why I didn't tell you. Barat's been warning me ever since 2 of his other girls found patrons at Lord Harrowmont's reception. They've been getting gifts already. Lord Rooston gave Elsie a surface silk gown and she's not even pregnant. Barat's getting impatient. You know how desperate the nobles are for more children? They can barely field enough soldiers to hold the walls against the Darkspawn. If I could give one of them a son, the whole house would celebrate. And we'd all be raised up to noble caste to join the family. It's what Barat's betting on. That's why he paid for my clothes, my voice lessons. He wants to share the reward. Stay out of trouble. I'll see you tonight. ठीक है, तो इस गेम में कन्वर्सेशंस बहुत सारे हैं, तो थोड़ा सहना पड़ेगा. ऑप्शंस पे जाता हूँ मैं. डायलॉग. चलो, थोड़ी साउंड लगता है बढ़ानी पड़ेगी. तो चलो चलते हैं. हाँ ठीक है, ऊपर ये रहा हमारा कैरेक्टर. ये हमारी कुछ स्टैट्स हैं. उसके बाद हमारे स्किल्स, टैलेंट्स, देन आफ्टर स्किल्स ये रही हमारी इन्वेंटरी, और ये रहा हमारा जर्नल जिसमें हम देख सकते हैं कि क्या क्या क्वेस्ट्स हैं हमारे, कौन कौन से क्वेस्ट कंप्लीट हुए, कौन कौन से भी चल रहे हैं. इसके बाद ये है हमारे कंप्लीटेड क्वेस्ट. ये हमारे कोडेक्स हैं, कुछ कुल मिलाकर ओवरऑल
देखते हैं, शायद 350 के आसपास कुछ कोडेक्स हैं जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। ये हमारा मैप, ये हमारी टैक्टिक्स हैं, उसके बाद सेटिंग्स। ठीक है, हाँ चलो। इन्वेंट्री में मेरे पास डैगर है, एच के लिए चाहिए मुझे 26 डेक्सटेरिटी। ये हमारा हेलमेट, और ये हमारे लीजन बूट्स हैं जिसमें कुछ बोनसेस हैं। तो आपको ओवरऑल गेम में कई सारे ऐसे क्या कहते हैं इसको, आर्मर्स मिलेंगे, वेपन्स मिलेंगे जिसमें कुछ ढेर सारे बोनसेस होंगे जो डैमेज आउटपुट या फिर कई तरह के रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे। यार इसके अलावा हमारे पास कुछ एसेसरीज़ हैं। तो सबसे पहले स्टैश ऑफ फॉरबिडन सीक्रेट, 6 विल पावर, 6 स्पेल पावर। मेरे ख्याल से मेज के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और हाँ ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद हम देखते हैं डैलिश एंड कॉम्बैट। ठीक है, हमने कुछ एसेसरीज को जो है इक्विप कर लिया है जिससे हमें कुछ बोनसेस मिल रहे हैं। तो चलो, तो जब आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे उसमें जो ग्रीन से हैं तो उसका मतलब है कि उसमें कुछ बोनसेस इंक्लूडेड है। जैसे कि मेरी स्ट्रेंथ 11 है और उसमें मुझे एक स्ट्रेंथ जो है अपने इक्विपमेंट से मिल रही है। डेक्सटैरिटी में भी यही है, विल पावर, मैजिक, कनिंग, कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसलिए मैं कह रहा था कि पहला प्राइमरी फोकस जो है मैं डेक्सटैरिटी पे करूँगा। बाकी सारी चीज़ें जो है कॉन्स्टिट्यूशन, कनिंग, मैजिक और स्ट्रेंथ, विल पावर, ये सारी चीज़ें इक्विपमेंट से पूरी करने की कोशिश करेंगे। हाँ ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये रहा एक चेस्ट। As you say. I shall do it. चलो, मेरे ख्याल से कोई इशू है या कोई ग्लिच है, तो चलो चलते हैं हम आगे। About sodding time. I was starting to think I'd have to bust in and get an eyeful of that spicy sister of yours, Garou. And people wonder where that grumpy old dwarf image comes from. But fine. Boss says we're out for a search and discipline. One of his smugglers is holding out on him. Name's Oskias. Some surfacer. Barat got word that he's been selling shipments topside that never make it to Barat's ears down here. He wants us to find the rotter and see what goods he's holding back. All he told me is find him. Duster's got some family from the merchant caste. He's probably staying near their quarters. Poetry to my ears, Selraka. ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम कन्वर्सेशंस करूँ ताकि गेम प्ले थोड़ा फास्ट हो। तो अभी हम लोग हैं डस्ट टाउन में। ये उजुमार जहाँ का एरिया है उसका एक पार्ट है, और ये रहा मेरा घर। Hey there, Carter boy. Hey there, Carter boy. Care to try a taste of this? Any way you like it. हेलो दद्दू। मेरे ख्याल से वो चीज़ें अभी स्पॉन नहीं हुई हैं। चलो Spare silver. My boy needs medicine. तो ये रहा मेन उजुमार सिटी, और हम लोग डायमंड कॉर्डर से डस्ट टाउन से बाहर निकल आए हैं। अब हम मैप देखते हैं मैं जाना कहाँ पे है। तो पहले जर्नल में देखते हैं हम। Oskias, one of the Barham smugglers, has been holding on the Barham's shipments and selling them to line of its own pocket. ठीक है, कोई है जो Barham के shipments को अपनी पॉकेट भरने के लिए बेच रहा है, जबकि उसको ऐसा करना नहीं चाहिए था। गैंग के साथ पंगा भारी पड़ सकता है। फाइन Oskias and show him exactly how Barhat feels about being cheated. Oskias was last seen in टैप्स्टर ट्रैवन। तो टैप्स्टर ट्रैवन में छुपा हुआ है, ये आखिरी बार देखा गया था। मेरे ख्याल से अब भी वहीं पे ही होगा। अब ये रहा टैप्स्टर ट्रैवन।
चलो चलते हैं वापस। और इसके अंदर वो रहा। Ancestors were smiling on my bed. They say the warrior cast. चलो इसके अंदर स्टार्ट करते हैं। Grey Wardens can look at. Hey, I was saving that seat. That's real thoughtful, Oscius. It's tiring work looking for you. How do you know my name? Look, I always been loyal to Barat. He's been good to my family. I know how much I owe him. My pleasure. Wait, I do have some lyrium. It's just ore. I made a side deal with one of the mining families. If it worked out, I was gonna bring Barat his cut, I swear. I'd be crazy not to. Suicidal, one might say. Could everyone who isn't about to die please turn around for a moment? This may be unpleasant. Thank you. You can't do this! Help! Call the guardsmen! This is murder! You two let me know if you need anything. I'll be in the back. It's just a bunch of rocks. You're gonna kill me for that? Then let me go. Tell Barat you killed me. I can run to the surface. He's never gotta hear of me again. I'll give you the lyrium. Do whatever you want with it. Give it to Barat. Sell it yourself. I don't care. I'll get out of the business. Open a dry goods shop. He'll never know I'm still alive. Please. What would you want if it was you? He won't. I swear. You'll never see me in Orzammar again. Thank you. You're as noble as you are strong. May the ancestors bless your steps. तो हमने इसे जाने दिया और उसका माल जो है हमने ले लिया है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। उससे पहले देखते हैं यहाँ पे कुछ है। Do you mind? I'm in the middle of a conversation. Can a man drink in peace? सब नशे में टल्ली हैं। वापस चलते हैं हम लोग। Was that smart? Down की If Barat finds out Oscius ran, he'll kill you. He'll kill me. He'll make you kill me, then yourself. Then he'll probably stew us and serve us to the poor. That's what I like about you. Pure blind optimism. We should bring Barat delirium as proof of what Oscius was doing. चलो अब चलते हैं डेस्क टाउन की ओर। मुझे कहाँ जाना है? नहीं, शायद यहाँ नहीं जाना था मुझे जाना था यहाँ पर, इसकी दुकान में। The king is old. His rule won't hold much longer. Prince Balin seems far more sympathetic to our interests than Trian. Balin has some tastes of his own that he knows I can provide. We'll finish this later. It's about time you two showed up. What happened with Oscius? That's all? I guess the Duster was smart enough to keep his main stash topside. And Oscius himself? Very interesting, seeing how my cousin was at the tapsters this afternoon. And he says he saw something change hands between you and Oscius, and then the Duster Sodding stood up and walked out on his own 2 feet. Does that sound like what I asked? Jarvia, what does that sound like to you? Sounds like some jumped-up face brands thought they could take a bribe and let him walk free. That's just not right. The lady says it's not right. You wouldn't disagree with a lady, would you? Right. I mean, no one's gonna say spit to you, Barat. But we can't move that free. We needed to get Oscius somewhere private. We took him to the lava sinks behind the mines. You won't be seeing him again.
You think I'll trust you over my own blood? This one's been thinking to defy me since the day we met. Thinks he's got some big bridges to fill, but there's just not much there. You're both on loose sand with me, but I'll give you one more chance. One job. ठीक है, लौंडा होशियार था, ये समझ गया कि हमने उस लौंडे को जाने दिया है. Anything you want, boss? The warrior cast is चापलूसी तो hosting करनी a पड़ेगी अपनी जान बचाने के लिए. all the best fighters, last man standing, you know the sort of thing. They're showing off for some Grey Warden who's looking for candidates to drag off to a life of eternal glory. Now, it's not often we get every named fighter in Orzammar lined up like that. And I have certain acquaintances who take an interest in this sort of thing. There's a lot of coin to be made when people get the fever up. Favorite fighter's an officer named Minar, veteran of 4 Darkspawn campaigns. Havaird's a long shot, just got back from a deep roads offensive. Some young buck who has all the ladies drooling. I've got a lot of money riding on him. Mine and other people's. I expect to see that 8-to-1 pay off. Understand? The fight only gets announced to contestants themselves to prevent illegal gambling. So first, you'll have to find a Verd, see who he's fighting and when. When the name Minar comes up, I want you to slip this drug into the bastard's water. It'll slow his reflexes, just enough to take the edge off, not enough to show. But it wears off quickly, so don't use it until just before his fight. You bet you will. Here's your pass to get on the grounds. The proving starts as soon as the clock strikes. And when I say I have coin on this, I'm not talking about some pittance, like the value of your life. If I don't see a Vaird's name on the winner's sheet, you'd better make sure I never see you or your sister ever again. ठीक है, तो ये लौंडा, इसका नाम क्या है? बेरहट, बेराहट, ठीक है, चलो कुछ भी नाम हो. तो इसने हमें टास्क दिया है कि हमें एक बंदे को जितवाना है, दूसरे के बंदे के कॉफी में जहर मिलाकर, ऐसा ही कुछ. तो चलो देखते हैं. और इसके लिए हमें जाना होगा सबसे पहले तो प्रूविंग में. और ये रहा प्रूविंग ग्राउंड. Turn around, Brand. No castless on the grounds. Looks legitimate. Go on through then. But stay to the trenches. Grey Wardens don't need some eyesore getting between them and the fighters. I shall do it. ठीक है, हमें एंट्री मिल गई है. हम चलते हैं अंदर. मैप में देखते हैं हमारा टास्क किधर है. ये रहा. Stone's Embrace. That's one of them. One of the Grey Wardens. इवर्ट, तो हमें इसे जिताना है. Talk to him. Say, welcome लेकिन to उससे पहले हमें ये Orzammar, पता old करना sir. पड़ेगा कि ये लड़ किससे Drink your रहा है. bathwater. Sweetheart, Sod it. He's stone drunk. He could draw a dead man for his bout and still lose. Barat's gonna kill us if we slip up here. He's already jumpy enough after that stunt with Ascaius. Hey, I just had an idea. तो ये पहले, तो जिस आदमी को मैं जिताना था वो पहले ही नशे में टल्ली पड़ा हुआ है. अब इस आदमी को जिताने के लिए क्या करना होगा? That's much better than my idea. I was gonna say we should go up in the stands and start a rock slide, but you're brilliant. You'll be a Verd. You'll go out in his armor, keep down the visor, and fight in his name. He wins, Barat wins, everybody wins. Except all the warrior caste braggarts you leave kissing dust. I sodding love the way you think, my friend. I was afraid Barat was going to kill us. You've got a heart of steel, Soraka. Get in the armor. Bout 3 is next.
Officer Minar versus the warrior Averd. Fighters, report to the ring. No more time. Make sure you have everything and go tell the Proving Guard you're ready to fight. And don't forget to keep your helmet down. तो चलो, मैंने इसका आर्मर शायद चढ़ा लिया है या मेरी इन्वेंट्री में होगा, नहीं। चलो क्या, मेरे ख्याल से मुझे प्रूविंग की तरफ चलना होगा। Combatants only. Okay. क्या कहता है क्वेस्ट? Combatants only. मेरे ख्याल से कुछ रह गया है। Combatants only. क्या? क्या हो रहा है ये? Where are you going? We can't leave now. Barat will kill us. शायद ये रूम था। हाँ ठीक है, इसका आर्मर यहाँ पे होगा। ठीक 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 ठीक, तो चलो उसकी शील्ड की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ड्यूअल वेपन से फाइट करूँगा। अब मुझे जाना है यहाँ पर। Combatants only. Combatants only. Okay. May fortune favor your fight, Averd. Are you ready? Don't keep the Proving Master waiting. Talk to me when you're ready to fight. May fortune favor your fight, Averd. Are you ready? As you say. This is a glory proving, fought under the watchful eyes of the paragons of Orzammar, for our honored guests, the Grey Warden. The warrior Averd, son of Galton, will fight Officer Minar, survivor of the battle at Kar Ellerin. तो ये हमारा फर्स्ट You honor me with this fight. May the stone show the boldest heart through the strongest arm. First warrior to fall is vanquished. Fight! We must not. ठीक है, सबसे पहले उनका स्किल, टैलेंट, जो कुछ भी हो उसको एक्टिवेट कर लेते हैं। पहला पकड़ गया। The winner is Averd! A truly memorable fight. The young cadet vanquishes the wily veteran. Healer, see to his injuries. The warrior Averd, son of Galton, will fight last year's Journeyman Division champion, Adalbo, proven in glory before the stone. You honor me with this fight. May we both win glory in the eyes of our lords.
First warrior to fall is vanquished. Fight! Damn you! Best be wary. Now we do battle. Come, let us end this. दूसरा वॉरियर डाउन. The winner is Eved! The ancestors have withdrawn their blessings and embrace a new champion on their field. The warrior Eved, son of Dalton, will fight Lenka, Silent sister in training. She has made her vows, but not completed her blooding. Will she be accepted into the legendary order? That will depend on her performance today. तो तीसरा चैलेंजर मिला है. First warrior to fall is vanquished. Fight! We fight for honor! तीसरा वॉरियर डाउन. The winner is Eved! चलो चौथी मेरे ख्याल से लास्ट फाइट होगी. Lenka went to the stone without a sound, as befits her vows. But it wasn't hard to see the blood that was spilled. Eved will advance to the final bout to determine the true champion of the ring against... What? Time out already? लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत खड़ी. Hey! That's my armor! Who are you? How dare you disrupt this sacred... Wait, I know that man. That's Eved. Then what imposter did I fight? Remove your helmet, warrior, and let all who watched you see your face. Your skills are impressive, but you are one man. Show yourself, lest I call the guards and have them do it for you. चोरी मेरी पकड़ी गई और सभी लोग नाराज हो गए सिवाय इस बंदे के. इसे मुझ में कुछ नजर आया. Castless! You insult the very nature of this proving! Guards, take this filth away! Hold your man, I pray you. This warrior has defeated the best you have to offer. Is that not what this proving is for? We are honored by your presence, Warden, but this proving is not solely for you. There are laws which have governed this arena for 1,000 years. This man is no warrior. He is casteless, rejected by the ancestors. His very footsteps pollute the stone. He has no place here. Except as your champion. Are you awake yet? Psst. Can you hear me? How hard did they sodding hit you anyway? Did you have to put up such a fight? हाँ, तो हम लोग जा गए हैं सेलर के अंदर. Let's go. As soon as everyone saw your face, Brand, the place went mad. Shut all the doors. Examined everyone for family and caste. One of the guards recognized me and figured we must be working together. They burned 3 candles to the stump interrogating me about who put us up to this. I think they knew, you know, about Barat. Huh. I guess not. I mean,
I've been in most of them. They don't usually have this many bloodstains on the walls. Any chance you see a way out? Good, you're awake. Barat will be glad to hear that. You caused a lot of trouble today. Barat lost 100 sovereigns for Lord Volney. The entire proving was declared invalid, and the Assembly already called for an investigation. You can't imagine the state Barat was in when he told me to get you. You're not in their cells anymore, and I don't think I appreciate the time and money it took to bribe the right people to get you back. You've got every guardsman at that proving thinking if he takes your head off, the ancestors will bless him forever. But they know whose hand holds the whip. When Barat claimed you, they knew who's going to get to watch your last breath. I don't think scaring you is what Barat has in mind. You risked exposing him before the entire warrior caste. Now they're asking questions, and as long as you have tongues to answer them, you're a threat. Enjoy your last night together, boys. Barat will be by soon to make sure you maintain your silence. ठीक है, तो हमें प्रूविंग में पकड़ा गया, लेकिन इन लोगों ने हमें प्रूविंग से निकाला और यहाँ पर अपने सेलल में ले आए हैं. चलो. Leave off with your noise. You're giving me a headache. Where? I don't see nothing wrong. Oh, you're probably just upset. I remember one time when Mistress Jarvia was mad at me. She didn't lock me up, but she yelled a lot. And she hit me on the head. But it was real nice of her not to kill me. चलो, पहले कैरेक्टर को अपडेट कर देते हैं. ठीक है, नाइस. और अब हमने इसकी जेब से चाबी निकाली है, दरवाजा खोला और इसकी पिटाई करें. Watch out! हमारे पास कुछ है? कुछ नहीं. यहाँ पर कुछ है और जल्दी जल्दी से हम लोग अपने आइटम को इक्विप कर लेते हैं ताकि इस टकले का बैंड बजा सकें. ओके फाइन. अब आओ बेटे, मैं तुम्हें बताता हूँ. As you say. चलो, ये तो गया. अपने साथी को छुड़ाते हैं. It has begun. If we want to get away with this, we can't leave one man alive to tell Barat what. और इसे भी कुछ पहना देते हैं. ठीक है. We've done. Let's move. I shall do it. मेरा ख्याल है यही रास्ता है बाहर जाने का. और यहाँ पे कुछ. Now you fall! Now we do battle! We must fight! Let us do it quickly!
तीनों काम तमाम करने के बाद देखते हैं इस चेस्ट में क्या है। और बैरल्स में भी कुछ है, आइस एरोस और डॉर्वेन हेलमेट। The Paragons watch over me. Quickly, we must fight! Right, that's it! ये क्या है बाकी? Come, let us end this! Watch out! Right, that's it! Good, another down! Get off! My fist. Fist? They hide a face. Nice. चलो, मेरे ख्याल से बाहर जाने का रास्ता यही होना चाहिए। हाँ, यही है, ये शायद नहीं है। I shall do it. Shall be done. We must fight. Let us do it quickly. Careful! So far so good. Health potions. Barrel make shield. As you say. और एक और वॉरेक्स। रून। No quarter shall be given! Our skill has won the day! चलो, अब मेरे ख्याल से हम लोग लगभग बाहर पहुंच गए हैं। देख लेते हैं यहाँ पे कुछ लूट हो। तुम खोल सकते हो इसे? I'll get on it. खोल तो सकते हो। ठीक है, ये दरवाज़ा भी नहीं खुलेगा और गेम सेव हो गया है, ऑटो सेव, मतलब आगे बॉस आने वाला है। I'm cutting the whore free. If that turncoat brother of hers doesn't know his place, I don't need precious Rika either. Rika? That the one you got all done up in lace? I've been wanting to get my hands on that. I know what you mean. She's yours if you want her, boys. And let me tell you, it tastes as good as it looks. What in sod all is that doing out of its cage? Let's teach this little duster a lesson. आओ बेटा। I shall do it. Watch out! Fight for honor! बरहात अब तुम्हारी निकलेगी। Now we walk!
battle. You're gonna have to move quicker than that. क्या मंडी काटी मैंने. Did you see him there all when we're done with you? And you just charged in and sodding slaughtered him. You have to be the luckiest duster in Orzammar. Barat's dead, and we're standing here. Hail to the sodding king! Oh, he was begging, all right. That look of utter surprise on his face when he tasted his own blood. That was as close to begging as Barat gets. Well, he sure was talking like she's still alive. But I won't turn down the chance to go take another peek. Hey, could you tell Rika I killed him? I mean, it doesn't do you any good if she thinks you're the most virile warrior in all the stone. You said it. Fortunately, if Barat's got them trained like he says, it should be a good long time before any guardsmen turn up here. ठीक है, तो हमने मार दिया है और इसके पास देखते हैं कुछ अच्छी चीजें हैं. चलो एक बार इधर उधर देख लेते हैं, कुछ चेस्ट या कोई लूट हो तो उसे बटोर लेते हैं. ये तरह सा जाता है बाहर और ये तरह सा जाता है चेस्ट की तरफ, जिसमें एक लॉन्ग बो. As you say. चेस्ट यहाँ पर, एक और हेलमेट. चलो यहाँ से निकलते हैं. Shall be done. और हम निकले सीधे इस भले मानुष की दुकान पे. You're not supposed to be here. ओके Wait, दत्तू. is that blood? Answer. और जैसे ही हम There they बाहर आते are! हैं, Seize the fugitives! यहाँ पे कुछ बाराती हमारा स्वागत करने के लिए Drop your तैयार हैं. weapons and walk down slowly. We will use force if you resist. You do not speak until the Shapers have judged you. One moment, my friend. Did you not suggest this Barat might have arranged their convenient escape? Regardless, the penalty for impersonating a higher caste is death. If Barat is as influential as you say, perhaps he also masterminded this Evaird's impersonation. He's dead? Barat had many enemies, but also powerful allies. Barat would have butchered us if he hadn't killed him first. Your friend has once again demonstrated his courage. We Grey Wardens travel far and wide in search of those with the potential to join our ranks. It seems I have found one. Let me make my offer formal. I, Duncan of the Grey Wardens, extend the invitation for you to join our order. This man is a criminal. You can't do this. I can, and I am. It would mean traveling to the surface lands and thus leaving your people, but it does offer you the chance to strike a blow against the Darkspawn and the Blight. Then before these witnesses, I hereby recruit you into the Grey Wardens. Know that you are most welcome. This is highly irregular. The warrior families will be most upset. Look at you, you duster. A warden. And to think I knew you when you were stealing bread. Before we brave the deep roads, I would like to make you a gift of this mace, since you have so few possessions of your own. It was once wielded by the warden Forel Idukan. I believe he was related to your king. I know you will continue his proud example. Goodbye, my friends, and thank you for your hospitality.
ओके, सो अब मैं चला हूँ ग्रे वार्डन बनने के लिए। कुछ और डायलॉग्स थे जिसमें थोड़ा We will be traveling south through the hinterlands to the ruin of Ostagar, on the edges of the Korkari Wilds. The Tevinter Imperium built Ostagar long ago to prevent the Wilders from invading the northern lowlands. It's fitting we make our stand here, even if we face a different foe within that forest. The King's forces have clashed with the Darkspawn several times, but here is where the bulk of the Horde will show itself. There are only a few Grey Wardens within Ferelden at the moment, but all of us are here. This blight must be stopped, here and now. If it spreads to the north, Ferelden will fall. Ho there, Duncan. King Kaelan. I didn't expect a royal welcome? I was beginning to worry you'd miss all the fun. Not if I could help it, Your Majesty. Then I'll have the mighty Duncan at my side in battle after all. Glorious. The other wardens told me you'd found a promising recruit. I take it this is he? Allow me to introduce you, Your Majesty. There's no need to be so formal, Duncan. We'll be shedding blood together after all. Ho there, friend. Might I know your name? Pleased to meet you. The Grey Wardens are desperate to bolster their numbers, and I, for one, am glad to help them. It's good to see one of the honorable stout folk outside Orzammar. Sounds like there's a story behind that. You must regale me with it sometime. I do. I'll make sure to have the finest dwarven brew brought up from the palace cellars. After we've dealt with the Blight, of course. I've been to Orzammar. King Endrin invited my father to a grand proving long ago. How does Endrin fare these days? Good. I hope to work with him as well as my father did. Allow me to be the first to welcome you to Ostagar. The Wardens will benefit greatly with you in their ranks. I'm sorry to cut this short, but I should return to my tent. Loghain waits eagerly to bore me with his strategies. Your uncle sends his greetings and reminds you that Redcliffe forces could be here in less than a week. Ha! Eamon just wants in on the glory. We've won 3 battles against these monsters, and tomorrow should be no different. I'm not even sure this is a true Blight. There are plenty of Darkspawn on the field, but alas, we've seen no sign of an archdemon. Disappointed, Your Majesty? I'd hoped for a war like in the tales. A king riding with the fabled Grey Wardens against a tainted god. But I suppose this will have to do. I must go before Loghain sends out a search party. Farewell, Grey Wardens. What the king said is true. They've won several battles against the Darkspawn here. Despite the victory so far, the Darkspawn horde grows larger with each passing day. By now, they look to outnumber us. I know there is an archdemon behind this, but I cannot ask the king to act solely on my feeling. Yes, we should proceed with the ritual. Every recruit must go through a secret ritual we call the Joining in order to become a Grey Warden. The ritual is brief, but some preparation is required. We must begin soon. Feel free to explore the camp here as you wish. All I ask is that you do not leave it for the time being. There is another Grey Warden in the camp by the name of Alistair. When you're ready, seek him out and tell him it's time to summon the other recruits. Until then, I have business I must attend to. You may find me at the Grey Warden tent on the other side of this bridge, should you need to. ठीक है, हमें कुछ कोड एक्सेंट्रीज मिली हैं। इसमें थोड़ी डिटेल है, डंकन कौन है, डार्कस्पॉन्स कौन है। चल इसको पढ़ने में टाइम नहीं लगाएंगे। तो हम पहुंच चुके हैं ऑस्टगार। यहाँ से मेन स्टोरी स्टार्ट होती है। तो फिलहाल हम लोग हैं वार्डन कैंप में, जहाँ पे स्ट्रेटजीज बनाई जा रही हैं कि डार्कस्पॉन से कैसे निपटना है।
जल्दी हम लोग युद्ध पे जाने वाले हैं। लूट से Hail, पहले you must be the Grey Warden कुछ चीजें recruit that करनी होंगी। Duncan brought. तो सबसे पहले हम आते हैं कैंप की तरफ, और यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है क्वार्टर मास्टर। So, any last wishes I can help fulfill before you head into Have you seen an elf running about? Young woman, red hair, carrying a suit of chain. Blast it. Where did she go? That suit better be patched up when she gets back, or by the maker up. Oh, pardon my manners. My troubles are no concern of yours, I'm sure. I'm the quartermaster. Did you come for supplies? Let me know what you'd like. ठीक है, चलो। और एक्सेस बेच देते हैं, एक्स बेच देते हैं, तो एक्स्ट्रा डैगर बेच देते हैं, या रहने देते हैं, ये आगे काम आएंगे। ठीक है, ये मेस और ये मेस, इसको कोई बोनस नहीं है। मॉल नहीं चाहिए, शॉर्ट बुक नहीं चाहिए, लॉन्ग बुक शायद यूज हो ना हो, एरो बेच देते हैं। ठीक है, इसको रखे रहेंगे। और उसके बाद डॉर्वन हेलमेट, इसको भी निकाल देते हैं। और कुछ है हमारे पास, ठीक है। और इसके पास देखते हैं क्या है। बैकपैक से हम इजीली परचेज कर सकते हैं। और इसके पास खरीदने के लिए कुछ है। स्टॉप द नेम हमारे बेचे हुए हैं। ठीक है, तो इस गेम में मनी सिस्टम थोड़ा सा टिपिकल है, कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड ही टायरिंग है। अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपको कई सारी लूट्स करनी पड़ेगी, लोगों की पॉकेट मारनी पड़ेगी, और धीरे धीरे आप करके पैसा जोड़ पाएंगे। लेकिन इस गेम में एक ग्लिच भी है, स्पॉइल भी से बोल सकते हैं, कि आप अपने वेपन को 2 बार बेच के मनी अर्न कर सकते हैं। तो आप सिंगल टाइम में आप अपने वेपन को बेचेंगे, लेकिन डबल मनी आएगा। फिर आप उस पैसे से वापस अपने सामान को खरीदेंगे, फिर उसे बेचेंगे, फिर खरीदेंगे, फिर बेचेंगे। तो सबसे पहले ये करने के लिए लेफ़्ट क्लिक करिए, ड्रैग करिए, राइट क्लिक करिए। जब ये एक छोटा सा विंडो खुल जाए जिसमें कई सारे कुछ आइकन्स दिए हों, तब आप ड्रैग करके इसे यहाँ पे लाइए। मेरे पास 33 सिक्के आ गए। अब मैं इसे वापस खरीदूँगा। मेरे पास 16 सिक्के हैं अभी भी, 16 गोल्ड कॉइन्स। अगेन सेम प्रोसेस को दोहराऊंगा। सो हमारे पास 500 गोल्ड हो चुके हैं, और
मेरे ख्याल से इतने बिगनिंग के लिए सफिशिएंट है। कुछ अच्छे गियर्स में परचेज कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाएगा। और उसके लिए हमें पहले ओस्टगार का क्वेस्ट निपटाना होगा। देन आफ्टर हम लोग बाहर जा सकते हैं, कुछ अच्छे वेपन्स खरीद सकते हैं। फिलहाल ये प्रॉब्लम केवल ओरिजिन में ही है। अवेकनिंग में आपको काफ़ी अच्छा सिस्टम मिलता है, आपको अच्छे पैसे मिलते हैं क्वेस्ट पूरा करने के लिए, या फिर कुछ वेपन्स या फालतू के आर्मर्स जो है उनको सेल करने के आपको अच्छे अमाउंट मिल जाता है। लेकिन ओरिजिन में अगर आप इस ग्लिच का यूज़ नहीं करते तो आपको कई सारी डिफ़िकल्टीज़ होंगी पैसे कमाने में और अच्छे गियर्स लेने में। जो खैर इसके पास देखते हैं। Hello again. Is there something you need? Some supplies, perhaps? Let me know what you'd like. Some recipes. Lacerate. Flask. Important है। Mushroom, fruit. और toxin extract. ठीक है, डेथ रूट हरा। नाइस। और एसिड फ्लास्क, कंसंट्रेटेड वेनम रेसिपी, करप्ट एजेंट, डिस्टिलेशन एजेंट, हेल्थ पोशन, हेल्थ पॉलिटाइज, हाँ जो कुछ भी बोलते हो, इंजरी किट और वीरियम पोशन। ठीक है, ये मेज कैरेक्टर्स के लिए काम आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से बाकी सारी चीज़ें आगे ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी। फिलहाल के लिए इतनी चीज़ें काफ़ी है। और अब हम अपने कैरेक्टर को लेवल अप कर लेते हैं। अगेन डेक्सटेरिटी पे फोकस होगा टोटल। इसके बाद इसके लिए हमें चाहिए 24 डेक्सटेरिटी। नहीं, 24 डेक्सटेरिटी तो है एक्सपर्ट कॉम्बैट ट्रेनिंग। ठीक है, अभी टैलेंट देखते हैं हम, एक्सपर्ट कॉम्बैट ट्रेनिंग। ठीक है, चलो इसकी जगह हम लोग डुअल वेपन ट्रेनिंग रन कर लेते हैं। इससे जो है हमारा जो भी स्किल है उसमें थोड़ा बोनस मिलता है, और डुअल वेपन मास्टरी में बोनस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। खैर चलो आगे चलते हैं। और हाँ चलो, यहाँ पे कुछ क्वेस्ट है जो थोड़े टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है फिर भी। तो अगले एपिसोड में मैं आगे की स्टोरी को प्रोग्रेस करूँगा मतलब। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।